Hello guys, good morning. Good morning everyone. कैसा चल रहा है बाबू? Is everything okay? कैसा चल रहा है चप्पंडी? चप्पंडी बाबू, what is going on? Good, good, very good. कुछ बोल लो. 1 minute. I'm checking for PPT to come. Give me a minute. शुरू किया. वॉइस ब्रेक लैग शुरू किया. एवरीथिंग एक बार चेक करो. थोड़ा रुको ना, 1 मिनट रुको, मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. एस्से लिखा है आपने देखा नहीं. क्या एस्से रे बाबा? आपका एस्से नहीं आ गया इधर. हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसा हो सर? सब बढ़िया है ना? अरे बाबू, ये तो एस्से हो गया. वेरी गुड. सुधा अंकुल, आप कैसा है? सुधा अंकुल, आप बढ़िया है ना? पहले आप बताओ, आप कैसा है? सो एवरीथिंग क्लियर ना? वॉइस अभी अभी क्लियर हो गया वॉइस? सो कल का बारे में, yesterday we discussed about Bella hydraulics. Any doubt related to it? और ज्यादा टेस्ट ले लेंगे बेटा, नेक्स्ट वीक में भी टेस्ट हो जाएगा. आई विल टेल. एनवीरो को कंटिन्यूअस टेस्ट होता है. एनवीरो को और एयर पोल्यूशन को भी. हाँ, वो भी शेड्यूल किया ऑलरेडी. मुसाविर, वो भी शेड्यूल किया. एयर पोल्यूशन को भी टेस्ट है. हाँ, वो भी शेड्यूल किया. नेक्स्ट वीक में 2 टेस्ट. नेक्स्ट वीक में 2 टेस्ट. वन इज कंप्लीट एयर पोल्यूशन, कंप्लीट वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग. अनदर वीक वाटर सप्लाई. Okay, I will announce time to time. I will announce. Yes, that is what chapter wise also I will plan and I will announce. Don't worry. Chapter wise also I will plan and I will announce. Don't worry. Yes, you need to study Imran Garu. टेस्ट ऐसा होता है, देखो ऑलरेडी प्लान टेस्ट. टुमारो 11 AM तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आएगा. टुमारो 11 AM SWM होता है. ओके, फर्स्ट टेस्ट. सेकंड टेस्ट एयर पोल्यूशन, कंप्लीट एयर पोल्यूशन नेक्स्ट वीक में. अनदर टेस्ट वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग. These two already planned for next week. I hope so. This is enough for next week. I hope so. This is enough because you need to revise subject. Na? You have to revise air pollution and wastewater engineering. And upcoming week, na, 25th June, we'll put complete hydrology test. Complete hydrology test. Okay? 25th or 26th. कुछ टाइम चाहिए तो 26th ले लो. Complete hydrology का टेस्ट होता है. Okay? Shall we divide it into 2? Shall we divide it into 2? बोलो. Hydrology into 2. Okay. We can make up to hydrograph 1 test on 26th. Okay, 1st July, complete hydrology. So that is okay now, na? 5 days time you will get. 5 days time you will get. That will be best, na? अरे ये तो सिंपल आसान सुधा अंकुल. एन दिया तो एन ले लो, एन नहीं दिया तो एन नहीं ले लो. बस डेटा में एन मेंशन किया, एन ले लो. एन नहीं मेंशन किया, एन नहीं ले लो. बस ज्यादा मत सोचो. सो आप तैयारी रखना चाहिए. एक बात हम ये आपको बोलना पड़ेगा. दोज हु आर लर्निंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम मी, every month those completed subjects का टेस्ट कंटिन्यू से रहेगा. You just watch in the WhatsApp group what I am sending the link which test is going on, and also I am planning the schedule will be released every week schedule I will release early itself. Okay, so that you can do revision also for that week. Next week schedule I will release in this week Sunday. I will announce the schedule regarding the test so that you can revise easily. So that will help you a lot. That will help you a lot. Test, how many number of tests you can write, that much you can improve yourself. कल तो पता हो गया ना आपको. कल तो पता हो गया आपको. हाँ, this is the one. OCF start करेंगे. OCF because OCF start करेंगे. नो ओनली 11 AM. और दूसरा टीचर का बारे में हम हमारा टाइम नहीं चेंज करेंगे. जानवी गारू, हमको पता है क्या चल रहा है, क्या हाल चल रहा है, हमको पता है. ये तो हमारा टाइम है. 11 AM इज माय यूनिवर्सल टाइम. इफ यू वांट केपी सर क्लास यू हैव टू कम, दैट्स इट. और आपको दूसरा टीचर चाहिए, वहां चलो. यू डिसाइड अबाउट इट. क्योंकि देयर इज नो फॉल्ट फ्रॉम माय एंड. ये तो फॉल्ट है ये टीचर का फॉल्ट, मेरा फॉल्ट नहीं. बिकॉज़ 11 AM and 5:30 PM आर माय रेगुलर टाइम्स सिंस आई एम इन एन अकेडमी. 11 AM and 5:30 PM आर माय रेगुलर सब्जेक्ट्स, रेगुलर टाइमिंग्स. ओसीएफ के बाद इरिगेशन शुरू करेगा सृष्टि. ओसीएफ के बाद इरिगेशन शुरू करेगा.
अरे 5:30 PM tomorrow we are starting geotechnical ना बेटा, 5:30 PM we are starting geotechnical, भूल गया क्या? Because OCF became high weightage, 3 to 4 marks we are getting. Irrigation is 0 to 2 marks. Students are messaging me. Last year irrigation में एक क्वेश्चन नहीं आ गया गेट में, पहले हम OCF करेंगे सर. It is for gate. समझेगा? Yes, last year तो एक क्वेश्चन भी नहीं आ गया गेट में. That is the problem. So students are asking me, demanding OCF only. So I am moving forward to OCF. OCF 30th से शुरू हो जाएगा बेटा, 30th से. No, last year कुछ नहीं आ गया रैंडम करो. Last year irrigation 0. Rahul, I am saying I will do this. You don't worry. I will do this. OCF will finish in 40 lectures. 40 lectures नहीं, 40 hours. 40 hours में OCF खत्म होता है. 30 lecture नहीं, 40 hours. 20 lectures, 25 lectures maximum. 20 lectures or 25 means next month OCF खत्म होता है. Next month means जुलाई में OCF खत्म होता है आपको. अगस्त में irrigation आएगा सिर्फ 1 महीने. हाँ, next अगस्त में ये आएगा ना आसाम में. OCF 4 questions will come in ESC. 4 questions will come in ESC. Not required, anything not required. Okay? Before OCF कुछ भी नहीं चाहिए, directly you can attend the class. Okay, good, बबलू गारू, nice. FM में डर लग रहा है, FM को कुछ करेंगे, टेंशन में मत चलो. उपाध्याय बोला, सुधांकुल क्या हो गया आपको? अरे वो करेंगे क्योंकि ये बोल रहे व्यूज नहीं आ रहे, ऐसा बोल रहे अनअकैडमी वाला, इनका वजह से बंद किया. वो भी शुरू करेगा, टेंशन में मत चलो बेटा. I will do it. I will do a crash course of FM that will be more helpful for you. You don't worry, I will take care about it. And FM को OCF को कोई कनेक्शन नहीं, डायरेक्टली यू कैन अटेंड OCF. जियोटेक्निकल से डर लग रहा है. जियोटेक्निकल इतना आसान सब्जेक्ट, इनको डर क्या है? अरे सुनो, एनवायरनमेंट में थोड़ा ट्रिकी टफ क्वेश्चन दिएगा. जियोटेक्निकल में तो सेम पुराना वाला क्वेश्चन, सेम मॉडल्स, बट क्वेश्चंस तो थोड़ा लेंथी होता है बस. हाँ वो आएगा आशीष, डोंट वरी. चलो शुरू करेंगे आज का लेक्चर. सो विल स्टार्ट टुडेस लेक्चर. विल स्टार्ट बेटा, बोलो फटाफट. Next, fourth property, we studied 3 properties. We studied 3 properties. Fourth property, storage coefficient. Storage coefficient. Storage coefficient. The volume of water. The volume of water that an aquifer releases. The volume of water that an aquifer releases per unit area. Per unit surface area for every unit change in the component of head. Unit change in the component of head. Normal to the surface. Normal to the surface is called as a storage coefficient. Is called as a storage coefficient. Storativity. Storativity expresses water yielding capacity of confined aquifer. Confined aquifer का water yielding capacity. Confined aquifer का water yielding capacity. Completed reading. I will explain. जल्दी मत चलो मुसाफिर. I will explain. तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ये क्यों आ गया अभी? So this is your aquifer having a unit surface area. Okay, this is unit surface area of aquifer. 1 meter, 1 meter. Unit surface area of aquifer. So it has a filled with water up to this level. पानी तो यहां तक फिल हो गया, इनका अंदर पानी तो यहां तक फिल हो गया. Now 1 meter unit head change हो गया. This is 1 meter unit head. When that 1 meter unit head change occurred ना, क्या हो गया? पानी किसको दिया है 1 meter unit head से? To whom it has given water? It has given to our well. It has given to our well. इतना कम हो गया, देखो. This much is reduced. This much is reduced. This much water is reduced. So this water given to well. So what is the volume obtained now from that 1 meter? That volume yielded. That is called storativity. That volume yielded na, for 1 meter depth head of water transferred to well. How much volume is yielded from aquifer to well? That is called storativity. समझ आ गया?
unit change in head. Delta H change in head is equal to 1 meter. In such a case, how much water is transferred from aquifer to well? That quantity of water yielded by well towards from aquifer. Quantity of water yielded towards well from aquifer. That volume is called storativity. समझ आ गया? क्लियर हो गया बाबू? What is storativity? समझ आ गया या नहीं? 1 मीटर डेप्थ और 1 मीटर चेंज इन हेड, 1 मीटर चेंज इन हेड का वजह से डेल्टा H इज 1 मीटर. यस, डेल्टा H 1 मीटर होना चाहिए बेटा. चेंज इन डेप्थ 1 मीटर होना चाहिए, डेल्टा H 1 मीटर होना चाहिए. ये तो टोटल डेप्थ ना. दिस इज अवर टोटल डेप्थ. टोटल डेप्थ ये तो अवेलेबल. देन व्हाट इज डेल्टा H? नाउ बोलो. डेल्टा H इज दिस मच. दिस इज डेल्टा H व्हिच इज 1 मीटर. सो 1 मीटर चेंज इन हेड होने के कारण से हाउ मच वाटर इज यील्डेड टू वेल? स्टोरेटिविटी. दैट इज स्टोरेटिविटी. चलो अब बात कर रहे हैं नाउ नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिविटी. कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिविटी. आपको परमिएबिलिटी के बारे में पता है या नहीं? कल बात किया के परमिएबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के कल बात किया ना. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिविटी. कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिविटी T. So we can write first. This one you need Sanyam. Completed. The rate of flow of water. The rate of flow of water through a vertical strip of aquifer. Rate of flow of water through a vertical strip of aquifer. Diagram सिर्फ समझ होने के लिए आशिकार. The rate of flow of water through a vertical strip of aquifer of unit width 1 meter, of unit width 1 meter, and extending full saturation height, and extending full saturation height under unit hydraulic gradient, for unit drawdown. Unit drawdown is called as coefficient of transmissivity. Statements are very important for engineering services exam. They can ask in terms of statements, definitions only. In terms of definitions only. Completed. T for tiger, T for transmissivity. अरे चलो completed. So क्या बात करें ट्रांसमिसिविटी के बारे में? You are having an aquifer. So this is a vertical strip of aquifer. Then this is the total aquifer region. This is aquifer. The thickness of aquifer is taken. This is thickness, total aquifer thickness. This is. And here for this aquifer, what we consider 1 meter width, unit width we are considering. 1 meter width, unit width. And when you say aquifer, water is not like straight away. Water will travel like this in an inclined path. Water surface is not straight away. It is an inclined path. And when water is falling down also, it will fall down. Water taken out to the well. It can take out to the well in that manner only. Please understand. In the inclined manner only, it will take out to the well or not. So it will fall down. Water in the aquifer will fall down in the inclined manner. In that inclined manner, when it is falling down, hydraulic gradient is also unit hydraulic gradient. So hydraulic gradient I is also 1. So please understand, Q is equal to KIA. Hydraulic gradient is 1. Okay. K into 1. K 1 into A. A is width 1 meter. Width 1 meter into thickness of aquifer. Understand? Now this rate of flow, K into 1 into B. So this rate of flow we call it as transmissivity. It is now changed to transmissivity. समझ आ गया? कुछ तो कुछ समझ आ गया? Shall I repeat? So Q is equal to KIA, ये पता है ना? Q is equal to KIA, ये पता है ना? Q we call it as rate of travel, rate of flow. Q is called rate of flow, discharge. That is equal to K is there, okay, coefficient of permeability. But now in this rate of flow, what is hydraulic gradient? I, L per H. Unit hydraulic gradient we said. Hydraulic gradient is 1. Okay.
Now for area we are writing width into thickness. Width into thickness. Shall we write for area? Area is equal to width into thickness. Width into thickness. Height. Arey, this height, Baba, this height. Not L into B. This height. So now what happened? This is 1. This is also width. What is width? What is width? 1 meter. So what you can write now? K into thickness of aquifer. K into thickness of aquifer. So that rate of flow for unit hydraulic gradient, unit width. What is the name given for? Rate of flow for discharge for unit width, unit hydraulic gradient. What we call it as? T. So what you get now? T is equal to coefficient of permeability into thickness of aquifer. KB. Coefficient of permeability into thickness of aquifer. Thickness is now represented by B. B means not width. In this case, thickness of aquifer represented by width. Vertical strip. Vertical strip of aquifer represented by B. Clear now? T is equal to KB. इनको बोल रहे हैं मीटर स्क्वायर पर डे यूनिट मीटर स्क्वायर पर डे मीटर स्क्वायर पर मिनट मीटर स्क्वायर पर आवर मीटर स्क्वायर पर डे पर यूनिट विड्थ मीटर स्क्वायर पर मिनट पर यूनिट विड्थ ये भी होता है ना बेटा सुनो डिस्चार्ज यूनिट क्या है बोलो डिस्चार्ज यूनिट मीटर क्यूब यस बी इज द डेप्थ ऑफ एक्विफर करेक्ट इमरान मीटर क्यूब पर डे और मीटर क्यूब पर सेकंड वी कैन से दिस ना डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड और मीटर क्यूब पर डे विड्थ बाहर निकल गया यू कैन राइट मीटर स्क्वायर पर डे पर मीटर विड्थ बोथ सेम ना मीटर स्क्वायर पर डे पर मीटर विड्थ मीटर स्क्वायर पर डे पर मीटर विड्थ बोथ आर दे मीटर क्यूब पर डे 1 मीटर विड्थ हो गया 1 मीटर विड्थ बाहर निकल गया पर मीटर विड्थ सेपरेटली लिख दिया पर मीटर विड्थ सेपरेटली निकल गया मीटर स्क्वायर पर डे पर मीटर विड्थ सो दैट इज मीटर स्क्वायर समझ आ गया t इज इक्वल टू kb कैसा हो गया b इज थिकनेस और डेप्थ ऑफ एक्विफर b इज थिकनेस और डेप्थ ऑफ एक्विफर और किसी को डाउट होगा फटाफट पूछ लो एनीवन हैविंग डाउट आस्क मी फास्ट चलो विल मूव ऑन नाउ अरे ये क्वेश्चंस आर अननेसेसरी 1 मिनट दिस इज आल्सो डन यस्टरडे टीटी चाहिए टीटी कहां चाहिए मैडम इधर अरे वाह चलो इधर एक वर्ड था वेरी इंपॉर्टेंट आपको रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस वाला का रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस सो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या होता है this is the cone where water will flow like this from both sides water will flow from both sides means when you are going to construct a well आप yes storativity means 1 meter depth extract करने के बाद क्या मिल रहा है कल बात किया ना हम डेल्टा जीडब्ल्यूवी ये डेल्टा जीडब्ल्यू में डेप्थ 1 मीटर होगा क्या मिल रहा है वो storativity होता है yesterday numerical solve किया ना अच्छा कर change in ground water volume in that if the depth traveled transferred extracted is 1 meter head that is called storativity चलो एक बात सुनो ये बात ध्यान से सुनो बेटा सो दिस इज ग्राउंड लेवल आपका ग्राउंड लेवल है वो इधर आप एक वेल कंस्ट्रक्ट किया यू कंस्ट्रक्टेड वन वेल नाउ द वेल कैन गेट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग स्ट्रैटा इट इज ए दिस इज ए वेल व्हिच इज ए नॉर्मल वेल वी स्टडी टाइप्स ऑफ वेल्स इन एनवायरनमेंट आपको पता है ट्यूब वेल क्या होता है ओपन वेल क्या होता है यू नो एवरीथिंग अबाउट वेल्स एंड वी आर नॉट हैविंग ए वॉल हियर वी आर हैविंग ए ग्रिल ओवर हियर दैट इज कॉल्ड ट्यूब वेल सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कुछ नहीं दे रहे वी आर गिविंग आयरन मेश इधर एक आयरन मेश लगा दिया एक ट्यूब वेल होता है ना आयरन मेश का अंदर से पानी चल जाएगा यू रिमेंबर दैट ना वी हैव गिवन ए strainer type tube well ऐसा लगा दिया now soil particles are here surrounding soil is here so as you constructed the well water coming from the soil and that is passing through these perforations voids and this is the strainer of the well strainer ये याद है आपको दोनों साइड में हम strainer लगा दिया do you remember environmental में types of wells बात किया अच्छे से कुछ डायग्राम डाल के क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया नंबर ऑफ पोर्स का बारे में ऐसा पानी आएगा अंदर यहां से दोनों साइड से पानी आएगा ना दोनों साइड से पानी आएगा या नहीं वाटर इज obtained by the well this is our well पानी तो दोनों साइड में आ रहा है वेल का अंदर दोनों साइड के how much radial direction it can travel so up to this maximum radial direction only देखो from this side this direction that maximum radial distance from which it can extract the water the maximum radial distance from left side or from right side from which it can extract the water that is called radius of influence समझ आ रहा है horizontally radially you constructed this is the well either from this side radially how much distance from maximum how much distance the well can get the water that is called radius of influence क्यों ये बात कर रहे हैं if you are talking about discharge from the well
From how much maximum distance it can extract the water, that will be important, na? If R is farther, R is very far away, it can get less water. R is close, it can get more water. आपका डिस्चार्ज को R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना बेटा? यस, करेक्ट करेक्ट संयम गारू. डिस्चार्ज को नो नो परमिएबिलिटी को नहीं, डिस्चार्ज को बोलो अच्छा होता है. संयम, डिस्चार्ज को बोलो. आई विल टेल व्हाट यू नीड टू डू. आई विल टेल. रुको रुको 1 मिनट रुको. ये समझ आ गया, पहले समझ आ गया रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है. रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? यस, टू सॉइल परमिएबिलिटी. सो यू पुट द हेडिंग नाउ. पुट द हेडिंग फर्स्ट, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस. रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस. अभी तो हेडिंग लगा दो. नंबर 7 ना, प्रॉपर्टी नंबर 7. 7 या 6? हाँ 6. प्रॉपर्टी नंबर 6, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस. You do one thing now, you draw this picture. ऊपर वाला पिक्चर. I'm zooming. टॉप वाला पिक्चर. Just the top वाला पिक्चर. This is our well. Done? Completed everyone? नेमिंग ओनली रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस नेम करो बस होता है, और ज्यादा ना चाहिए. अब लिखो the radial distance in any direction, the radial distance in any direction from the midpoint center of well, the radial distance in any direction from the center of well through which water extracted by well from zone of aquifer, from zone of aquifer is radius of influence, is radius of influence. एक बार पढ़ लो, समझ आ गया या नहीं बोलो. So I have not told about permeability first. अच्छा गारू, I told about flow rate only. Discharge and radius of influence relation only. That fellow, I told him very clearly, don't compare with permeability. That fellow, who is that fellow? Sanyam. Sanyam only told. Check the comment एक बार. Okay. ये पिक्चर देखो, पिक्चर में रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया लो परमिएबिलिटी में, डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया लो परमिएबिलिटी में, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कम हो गया हाई परमिएबिलिटी में. पिक्चर देखो, समझ आ गया. दिस इज लो परमिएबिलिटी, लो परमिएबिलिटी. नो वेल वाल से नहीं बेटा, निपुण गारू. यस, वाटर खुद से ट्रैवल करेगा, कोई दिक्कत नहीं. अरे आप ये मिड पॉइंट तक ले लो, यहां तक हो जाएगा ये सब. निपुण जी, मिड ऑफ द वेल ओनली. ऑलवेज विल टेक द मिड पॉइंट ऑफ वेल. ऑलवेज वी टेक एट द मिड पॉइंट ऑफ द वेल. यहां से यहां तक. सो मींस यहां से यहां तक मिड पॉइंट ओनली. ओके. अरे ये नहीं चाहिए अननेसेसरी एक्स्ट्रा पिक्चर्स ड्रा करके, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेके. एडिशनल इंफॉर्मेशन ज्यादा होता है आपको, अननेसेसरी ना, प्लीज अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड ये ले लो ना, व्हाट इज रिक्वायर्ड ये ले लो ना, बस होता है. लो परमिएबिलिटी के वैल्यू लो हो गया, आर इंक्रीज हो गया. हाई परमिएबिलिटी आर वैल्यू कम हो जाएगा, आर वैल्यू कम हो जाएगा. डिस्चार्ज तो बढ़ जाएगा ना, डिस्चार्ज इंक्रीजेस बिकॉज़ हाई परमिएबिलिटी. डिस्चार्ज हियर इज लेस. रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, डिस्चार्ज कम होता है. ये कम होगा, डिस्चार्ज ज्यादा होता है. ठीक है, समझ आ गया? अच्छा करो. बिकॉज बेसिक फार्मूला तो ये होता है Q इज इक्वल टू क्या है. आप रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ले लो, कोन ऑफ डिप्रेशन ले लो, बेसिक फार्मूला तो ये भी होता है Q इज इक्वल टू क्या है. चलो समझ आ गए? और किसी को डाउट है इनके बारे में? और किसी को डाउट है अभी तो पूछ लो. मूविंग फॉरवर्ड और ज्यादा टफ आएगा. मूविंग फॉरवर्ड अभी तो पूछ लो. समझ आ गया? अच्छा कर. वाई स्किप, वाई आई हैव नॉट डिस्कस्ड रिगार्डिंग दैट. समझ आ गया? अच्छा कर. देखो निपुण क्या बोल रहे हैं. अरे ये छोड़ दो ना बाबू, नहीं चाहिए एग्जाम को, नहीं चाहिए एग्जाम को. आपको सिर्फ व्हाट इज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ये बस चाहिए, ज्यादा मत सोच लो. अननेसेसरी थिंकिंग ज्यादा होता है निपुण गारू आपसे. आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा, ये अननेसेसरी थिंकिंग को. आप सिर्फ निपुण मीन सिंपल मीन जैसा भी रखो.
तो एक नाव डिप्रेशन होता है ना, कोना डिप्रेशन। एक बार देखो, when water is getting taken by the well, well ज्यादा पानी ले रहा है, well ज्यादा पानी ले रहा है, then surrounding जगह में पानी कहां चले गए, सराउंडिंग प्लेस में पानी ड्राई हो गया ना सॉइल, सराउंडिंग प्लेस में क्या हुआ, तो कम हो गया, हाँ पानी तो कम हो गया, इनका वजह से इट फॉर्म्स ए शेप लाइक ए कोन शेप। as more water is taken by well is taking more water, इनका वजह से इधर ड्राई हो गया, ड्राई, and that dry is forming like a कोन जैसा फॉर्म हो गया ना, दैट फॉर्मेशन ऑफ पानी ऐसा 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 करके कम हो गया। देखो यार, लार्ज वाटर विथड्रॉयल्स फ्रॉम एन एक्विफर, लोअर वाटर टेबल क्रिएट ए कोना ऑफ डिप्रेशन दैट कैन रिजल्ट इन शैलो वेल्स गोइंग ड्राई। समझ आ गया? पिक्चर तो ड्रा मत करो, टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, पिक्चर तो ड्रा मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, जस्ट यू राइट डाउन द थियरी, यू जस्ट राइट डाउन द थियरी कोना ऑफ डिप्रेशन के बारे में पूरा। You understand now what is cone of depression? You understand the 7th point? Yes. Number 7 property. Property number 7 cone of depression. Property number 7 cone of depression. Completed, done. Everyone finish na, chalo. Just to inform you, अरे आपको मैसेज बॉक्स नहीं दिखा रहा है सुधाकर? दिस इज ओनली जस्ट टू अंडरस्टैंड फॉर यू, जस्ट टू अंडरस्टैंड फॉर यू। देखो, दिस इज कोना ऑफ डिप्रेशन फॉर्म्ड, कोना ऑफ डिप्रेशन फॉर्म्ड, पानी वाटर टेबल से ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, जस्ट टू फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट, मोर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। पानी ऐसा आ रहा है इनका अंदर, इनका बाद में तो पानी नहीं आएगा, नेक्स्ट में तो पानी नहीं आएगा, समझ आ रहा है? एंड दैट कोना ऑफ डिप्रेशन ऑक्यूपाई होने वाला एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, इनका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है? अप टू व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस यू आर टेकिंग द वाटर, दैट इज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड दैट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। चलो, determination of discharge from a design well। आप एक वेल को डिजाइन कर रहा है, यू आर गोइंग टू डिजाइन ए वेल, बिकॉज बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल आपको ये पता करना पड़ेगा ये वेल आफ्टर कंस्ट्रक्शन वंस स्टार्टेड विथड्राइंग द वाटर हाउ मच वाटर इट कैन गिव। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वेल कैन गिव 100 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये सिर्फ 10 मीटर क्यूब पर सेकंड दे रहे हैं, आपका पूरा का इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा ना? ऐसा नो, यू आर एक्सपेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट टू एक्सट्रैक्ट 100 मीटर क्यूब पर सेकंड, हमारा एक्सपेक्टेशन 100 मीटर क्यूब पर सेकंड है, बट पूरा का आने वाला 10 मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया, व्हाटएवर वी एक्सपेंडेड दैट विल बी अननेसेसरली वेस्टेड। So you need to know how much discharge is to be provided after construction, but after construction पता करना यूज नहीं, before construction itself you have to know at least theoretical value of discharge, at least a theoretical value of discharge। So for that we are talking now, for that we are discussing first one, Dupit's theory। Dupit's theory, Dupit's theory क्या होता है? Dupit's theory, this is for wells in unconfined aquifer, wells constructed in, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका क्वेश्चन में आप देख रहे हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर के बारे में क्वेश्चन आ गया, आप ड्यूपीट को फॉलो करना पड़ेगा, समझ आ रहे? आपका क्वेश्चन में अनकन्फाइंड के बारे में दिया, ड्यूपीट को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ड्यूपीट थियरी, ही प्रपोज्ड ए थियरी रिगार्डिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनकन्फाइंड एक्वीफर, एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनकन्फाइंड एक्वीफर। क्या हो गया? सो बिफोर ही इज गिविंग सम फार्मूला, ऑलवेज एनी साइंटिस्ट व्हाट द साइंटिस्ट कैन डू, साइंटिस्ट कैन डू सम assumption, द साइंटिस्ट कैन डू सम assumptions। फर्स्ट वन, फ्लो इज हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म, फ्लो तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म। किसी को वॉइस ब्रेक हो रहा है? एनीवन फेसिंग वॉइस ब्रेक? नो। अरे आप तो रिचार्ज करो, नहीं होगा हमारा अंबानी से बात करो, आपका कंट्री में टावर लगा देंगे, वी गिव यू न्यू टावर इन योर कंट्री बाबू। सो फ्लो इज हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म, फ्लो इज हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म। पानी तो सबसॉइल से आ रहा है ना, पानी तो सबसॉइल में आ रहा है ना, दैट सबसॉइल फ्लो इज, सबसॉइल फ्लो obeys Darcy's equation, Darcy's law। Subsoil flow obeys Darcy's law, obeys Darcy's law। Flow is considered to be steady, laminar and radial flow, steady, laminar and radial flow। Flow is considered to be steady, laminar and radial flow। Aquifer is homogeneous, aquifer is homogeneous and uniform। अरे पूरा का पूरा assumption में चल रहा है। Velocity of flow proportional to
tangent of hydraulic gradient. Velocity of flow is proportional to tangent of hydraulic gradient. Means he is taking all values as constant, simple. All values considered to be constant. Laminar steady, uniform, radial flow, homogeneous. पूरा का पूरा साइल का अंदर नहीं पाइप का अंदर चलने वाला जैसा एनालिसिस किया. Velocity of flow is proportional to tangent of hydraulic gradient. Now हो गया कंप्लीटेड राइटिंग. अरे फ्लो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का टेंजेंट पता है आपको? हाँ, इनका टेंजेंट का चलेगा ना. चलो अभी वेल का बारे में assumption दे रहे हैं. अभी वेल का बारे में assumption दे रहे हैं. Well penetrates and extracts water. Well penetrates and extract water from the entire thickness of aquifer. Well penetrates and extract water from the entire thickness of aquifer. Total thickness of aquifer. Well penetrates and extracts water from entire thickness of total thickness of aquifer, giving water for well. और ये भी बोल रहे हैं coefficient of permeability and transmissivity. Coefficient of permeability and transmissivity and coefficient of transmissivity are constant throughout the aquifer. Throughout the aquifer. If he not given all these, na, people like Nipun Garu can ask so many unnecessary questions. That is what Sanyam. If he not given all these assumptions, na, Sanyam, Nipun और अच्छा गारू बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ के चल जाएगा. If somebody can ask any question, immediately say go and read my assumption. One universal answer क्या रहता है? Some scientist coming and questioning, doubting his analysis. Immediately can give only one answer. Go and read my assumption. Go and read my. That is only universal answer होता है. So if you want to become scientist in future, अच्छा गारू पहले अच्छे से assumptions लिखो, बाद में scientist बनाओ. So before you are going to invent something, first write all assumptions. Obviously na, Bablu. Obviously na. So all these are assumptions for Dupit's theory. Based on that he relayed. Based on that he is going to give you analysis. He is going to give you analysis. इनका वजह से एनालिसिस दे रहे Dupit का. चलो कंप्लीटेड. बबलू हो गया ना. सो दिस इज ए वेल. ओके, दिस इज ए वेल. ये वेल को वाटर टेबल यहां है. वाटर टेबल यहां है. वाटर टेबल. सो यहां से पानी ऐसा है वेल का अंदर. वाटर टेबल वेल का अंदर पानी ऐसा आ रहा है. ऐसा आ रहा है. सो वी कैन हैव ए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हियर I. We can find out the hydraulic gradient I here, and this is when you find out this is the total radius of well. This is said to be total radius of well, radius r. One point I am considering, change in radius, small point I am considering, dr. Hydraulic gradient तो सेम रहेगा ना r में, dr में कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसे ऑलरेडी एज पर assumptions hydraulic gradient तो सेम रहेगा. Hydraulic gradient तो सेम रहेगा. हाँ, discharge entering from the subsoil strata like this into the well. Discharge is entering through water table. Discharge तो आ रहा है. Discharge तो आ रहा है. अब तो हम लिख रहे हैं I for this. I for this. For this small dr. For this छोटा dr होगा ना, इनको I लिख रहे हैं. ये dh होता है ना, this is the dh. So now I is equal to dh by dr. हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं? Total radius of well को I होता है. Small change in radius of well में this is height and this is change in radius. I is equal to dh by dr. Now I am writing Q is equal to KIA. Okay? Q is equal to KIA. What is I? As per this, dh by dr. dh by dr. Now area 2 pi r into h with respect to radius 2 pi r h. We can take this 2 pi r h area. अब तो ऐसा लिख रहा है. We are writing like k dh 2 pi h into dr by r by dr. R by dr. Shall we write this? Q is equal to k dh 2 pi h r by dr. R by dr. किसी को डाउट है इनके बारे में? बोलो फटाफट. वन मिनट. हाँ, ये भी बोलना पड़ेगा. वन मिनट. ओके, उकरम आर रेडियस क्लियर हो गया ना? अभी तो क्लियर हो गया ना. चलो नाउ आई एम राइटिंग फॉर dr by r. अरे अच्छा गारू, ये रिजल्ट्स आ रहे ना CCMP COAP एक साथ में आ रहे. बच्चे लोग बहुत परेशान कर रहे हैं.
चलो एनआईटी नागपुर, अरे ये दो तीन मैसेज वैसा भी आ गया, वो बोल रहे हैं एनआईटी नागपुर में सीटीएम या ट्रांसपोर्टेशन अच्छे प्लेसमेंट है, आप क्यों नहीं बोल रहे सर हमको, ऐसा भी पूछ रहे बच्चे लोग। एनआईटी नागपुर ये बर्बाद हो जाएगा रे बाबू, मत चलो बोलने के बाद, हमारा दोस्त है उधर उधर ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे क्या करेंगे। एक्सट्रैक्शन एरिया होता है, वेल एरिया, यस करेक्ट इमरान गारू, वेल का एरिया भी ले रहे, हमको पता है आशिष गारू, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को पता है, और दूसरा स्टेट वाला को ये पता नहीं ना, एक गलत जगह से इन्फॉर्मेशन लेके वो बोल रहे हैं एनआईटी नागपुर अच्छा होता है, क्योंकि आजकल हर एक लोग वाईटी वीडियो डाल रहे हैं कुछ ज्ञान देने के लिए, इनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलता, कुछ भी बोल रहे हैं वाईटी वीडियो में। सो दैट इज व्हाई जेन्युइनली फीडबैक देने वाला को नहीं सुन रहे आजकल बच्चे लोग। एनआईटी नागपुर में कुछ भी नहीं, हमको पता है वो। हाँ assumption तो लिखना पड़ेगा बबलू, करेक्ट। dr/r is equal to 2 pi k by q, 2 pi k by q h dh, shall we write this na, shall we write this na, dr/r is equal to 2 pi k by q into h into dh। so अब तो क्या कर रहे हैं, we are assuming there are two different wells at two different distances, हम ये सोच रहे, ध्यान से सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को चल रहे हैं हम, we are moving on to the most important part, okay। so this is ground level, सुधा गारू इनका घर में वेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये तो प्लान है, अभी तक नहीं वेल, डिजाइन वेल है वो, दिस इज डिजाइन वेल, सुधा गारू इनका घर में वेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, डिजाइन वेल, ओके। बिफोर कंस्ट्रक्शन इनको पता हो गया ऑलरेडी 2 wells are there in his near to his house, 2 wells are there already existing near to his house, 2 wells are there, so 2 wells बाजू वाला घर में होता है, this is well 1 which is at a distance of, this is center midpoint, okay, midpoint of design well, this is already existing well का midpoint at a radial distance of r1, at a radial distance of r1 ये एक ऑब्जर्वेशन वेल रहता है, we call it as observation well 1 means already existing well and this is another well, this is another well, सुधा गारू का दोस्त है, और दूसरा हाँ another observation well 2, another observation well 2 होता है, so इनका मिड पॉइंट से भी रेडियल डिस्टेंस ले लिया हम, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन well 2 to हमारा well r2 मींस ये दोनों पानी लेने के बाद भी सुधा गारू को पानी आएगा ना, ऑलरेडी आर टेकिंग द वाटर, देखो ऑलरेडी आर टेकिंग द वाटर, वी हैव कंस्ट्रक्टेड well 1 हियर, well 2 हियर, एक बात सुनो, एक वेल तो इधर डाल दिया, दूसरा वेल तो इधर डाल दिया, पानी यहां से आ रहा है, पानी यहां से आ रहा है, फर्स्ट इट कैन गिव टू well 2 देन इट कैन गिव टू well 1 देन सुधा गारू का आएगा, देन ओनली ही कैन गेट वाटर, सो बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस तो करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन दैट फाइनली सुधा गारू को हाउ मच वाटर ही कैन गेट, दैट शुड बी एनालिसिस टू बी डन, समझ आ रहा है। वाटर कोना ऑफ डिप्रेशन और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस से, कोना ऑफ डिप्रेशन और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस से पानी तो दूसरा जगह पे आ रहा है, यहां से पानी आ रहा है इनका डिजाइन वेल का अंदर, सो दिस इज द वाटर कमिंग फ्रॉम डिजाइन वेल, सर फ्रॉम सॉइल टू डिजाइन वेल, यहां से इस आ रहे, समझ आ रहे बेटा। सो ये ऊपर कोना ऑफ डिप्रेशन का ऊपर पानी है, कोना ऑफ डिप्रेशन का ऊपर पानी है, बोलो ना जल्दी, कोना ऑफ डिप्रेशन का ऊपर तो पानी नहीं है, सो सुधा गारू कैन गेट वाटर ओनली फ्रॉम दिस डेप्थ, सुधा गारू कैन गेट वाटर ओनली फ्रॉम दिस डेप्थ एंड द well 1 इज गेटिंग वाटर ओनली फ्रॉम दिस डेप्थ, समझ आ गया, अभी समझ आ गया, ये वेल को यहां से आएगा पानी ओनली फ्रॉम दिस डेप्थ ही कैन गेट द वाटर, ये वेल को ज्यादा पानी होता है, सो कोना ऑफ डिप्रेशन में तो पानी नहीं, यहां से पानी आएगा, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ व्हाटएवर द डिस्चार्ज कमिंग इनटू आवर वेल, व्हाटएवर द डिस्चार्ज, समझ आ रहा है ना, ये पूरा डेप्थ होता है, दिस इज अ टोटल डेप्थ कैपिटल H, रिमेनिंग लेफ्ट ओवर डेप्थ क्या है, लेफ्ट ओवर डेप्थ स्मॉल h, लेफ्ट ओवर डेप्थ क्या होता है, स्मॉल h, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, इंटीग्रेट कर रहा है, इंटीग्रेटिंग r1 टू r2, इंटीग्रेटिंग r1 टू r2 dr/r is equal to, dr/r is equal to integrating h1 to h2, पता है ना, h2 for observation well 2, h1 for observation well 1, h2 for observation well 2, h1 for observation well 1, so ये कंपनसेशन का वजह से आपको आटा दे रहे हैं ना हम, वी आर गिविंग ना, आपको तो आटा मिल रहा है ना बेटा, 2 pi k q h into dh, h into dh होता है ना बाबू, समझ लो। हाँ ये देखो, ये पिक्चर देखो मुसाफिर, बॉटम से भी होता है ना, देखो फ्रॉम द बॉटम, ये पिक्चर देखो, समझ आएगा, यहाँ एंड ऑफ एक्विफर थिकनेस, दिस इज कोना ऑफ डिप्रेशन टॉप, कोना ऑफ डिप्रेशन टॉप, ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला ड्रा डाउन होता है, ऊपर वाला है ना ऑलरेडी ड्रान वाटर, ड्रा डाउन, दिस इज ड्रान अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ड्रा डाउन, यस यस ड्रा डाउन होता है ऊपर वाला, यहां से यहां तक ले लिया ना ड्रान, यू रिमेंबर दैट h is equal to s plus h, इन एनवायरमेंटल इन्फिल्ट्रेशन गैलरी में बहुत अच्छे से बात किया इनके बारे में, ड्रा डाउन प्लस रिमाइंडिंग दैट h is equal to s plus h, सो इंटीग्रेट करने के बाद क्या है, इंटीग्रेट करने के बाद क्या है, ln r2 by r1 is equal to, ln r2 by r1 is equal to 2 pi k by q, 2 pi k by q h2 square minus h1 square by 2, h2 square minus h1 square by 2, सो 2 2 कट होता है, कैंसिल हो जाएगा 2 2, सो हमारा टारगेट क्या होता है, व्हाट इज आवर टारगेट, आवर टारगेट इज डिस्चार्ज इज इक्वल टू pi k h2 square minus h1 square by ln r2 by r1, समझ आ गया, q is equal to pi k h2 square minus h1 square by ln r2 by r1, इतना ज्यादा अच्छे से स्टार मार्क डाल दो बेटा, स्टार मार्क को डाल दो, वेरी इंपॉर्टेंट वाला होता है।
cone of depression is not with respect to wells. Cone of depression is with respect to the soil. You can say that na, Nipun garu. Cone of depression is with respect to soil. अरे होल स्क्वायर नहीं बाबू सुधांकुल, होल स्क्वायर मत ले लो, मजा आएगा। हो गया कंप्लीटेड, शैल वी मूव गाइस। डायग्राम ड्रा किया, डायग्राम पिक्चर तो आ गया। हाँ पिक्चर में ये भी लिखना पड़ेगा। यू कैन ड्रा द बॉटम लाइन। दिस इज इंपरवियस स्ट्रैटा बॉटम लाइन। बॉटम लाइन तो इंपरवियस स्ट्रैटा होता है, बॉटम लाइन इंपरवियस स्ट्रैटा होता है। नाउ दिस इज क्या होता है, S2, ये पूरा का पूरा H2, सेम दिस इज S1, ये पूरा का पूरा H1। समझ आ गया? S2 H2 S1 H1 SN H, R1 R2 all are with respect to observation well 1, observation well 2, S1 S2 H1 H2 R1 R2 completely related to observation well 1 and observation well 2। अब तो बात करना पड़ेगा, now we have to talk very important for our exam because concept of UPT तो खत्म है, UPT का concept तो हो गया। ओके एग्जाम में ऐसा आएगा, एग्जाम में ऐसा आएगा। व्हाट इज क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन नहीं, सुनो, इफ two observation wells located, other student want the diagram to draw, any other student want the diagram to draw other than Sudha Garu? Everyone completed na? Everyone completed na? हाँ अरे आप बाद में लिखो, ड्रा करो सुधांकुल, बाद में ड्रा करो। करेक्ट अच्छा गारू। सो नाउ वी आर कन्वर्टिंग टू एज पर रिक्वायरमेंट। अच्छा गारू, आसपास का घर से पानी देने के एज पर रिक्वायरमेंट वी आर कन्वर्टिंग नाउ टू ऑब्जर्वेशन लोकेटेड ना। इनको ऐसा लिख रहा है Q इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन वेल्स लोकेटेड। अभी क्लियर हो गया ना? नाउ इट इज क्लियर। हाँ 1 मिनट तो वेट करना पड़ेगा, पूरा क्लियर होता है। किसी को भी पॉसिबल हो सकता है, आपको भी पॉसिबल हो सकता है सुधांकुल। Q इज इक्वल टू पाई के H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर बाई ln R2 बाई R1, ये तो पता है ना? अरे ln क्या होता है? log E। ओके log टू द बेस E ln। बच्चे लोग ये पूछ रहे सर ln क्या होता है? हाँ log टू द बेस E। देन इफ ओनली वन वेल एग्जिस्ट, सुधागारू का बाजू में कोई नहीं है क्योंकि बदमाश लोग, सो इनका बाजू में सिर्फ एक वेल होता है। ओनली वन ऑब्जर्वेशन वेल एग्जिस्ट, वन ऑब्जर्वेशन वेल एग्जिस्ट। अब क्या करेंगे? ओनली वन ऑब्जर्वेशन वेल इज अवेलेबल। अब क्या करेंगे बाबा? Q इज इक्वल टू पाई के कैपिटल H स्क्वायर माइनस वन ऑब्जर्वेशन वेल इज देयर, वन ऑब्जर्वेशन वेल, ये ऑब्जर्वेशन वेल का हाइट H1 स्क्वायर ln ऑब्जर्वेशन वेल 1 रेडियस ऑफ आवर वेल, रेडियस ऑफ आवर वेल, ऑब्जर्वेशन वेल रेडियस बाय रेडियस ऑफ आवर वेल। ये काम करो 1 मिनट। रेडियस ऑफ आवर वेल मत ले लो इधर, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ले लो, R1 बाय रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। हाँ वो भी बोल रहे हैं ना मुसाफिर, जल्दी जल्दी में क्या बोल रहे हैं? R1 बाय रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ले लो, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। ओनली वन ऑब्जर्वेशन वेल लोकेटेड, टू नहीं ओनली वन इज देयर। कैपिटल H, हाँ R बाय R1, R बाय R1। रुको, कौन ज्यादा होता है बेटा दोनों में? कौन ज्यादा होता है? R1 बाय R2। हम ऐसा लिख दिया R1 R2 विच इज मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम R2 होता है, R2 बाय R1। सेम हाईएस्ट ले लो क्योंकि ये कंफ्यूजन में चलेगा कभी कभी, क्या डेटा दे रहे हैं, क्या रेडियस दे रहे हैं, क्या रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा लेना, हमेशा कंफ्यूजन में चलेगा ना। यू रिमेंबर लाइक हायर रेडियस वैल्यू बाय लोअर रेडियस वैल्यू, देन इट विल बी इजी फॉर यू। R बाय R1, ठीक है? बड़ा बाय छोटा, हाँ ऐसा याद रखो बस, बड़ा बाय छोटा। नाउ द लास्ट वन, मैं बोल दिया ना, सुधागारू का सराउंडिंग में कोई नहीं रहेगा, सुधागारू का सराउंडिंग में कोई नहीं रहेगा। नो ऑब्जर्वेशन वेल्स, सिंगल वेल भी नहीं है सराउंडिंग में, नो ऑब्जर्वेशन वेल्स। अब क्या करेंगे सुधांकुल? सुधांकुल बहुत खुशी हो रहा है अभी क्योंकि पूरा पानी सुधांकुल को मिलेगा। अभी तक कोई वेल नहीं, फुल टू फुल पानी सुधागारू को मिलेगा। अरे आपको इतना लाश नहीं, अभी फुल पानी आपको मिलेगा, ले लो फुल पानी मिलेगा। पाई के कैपिटल H स्क्वायर माइनस स्मॉल h स्क्वायर ln R बाय RW। अब तो पता चलेगा, सुनो ध्यान से। यू वांट टू कंस्ट्रक्ट ए वेल फॉर योर रिक्वायर्ड डिस्चार्ज। आपका 100 मीटर क्यूब डिस्चार्ज चाहिए, then what should be the radius of your well? You put here 100 meter cube per second discharge, then you get a required diameter or radius of your well to be extracted. अभी हम कोई नया वेल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका रेडियस या डायमीटर पता चलेगा, होना चाहिए। we need to know what radius we need to excavate, what diameter we need to excavate. In such a case, how much discharge you need from the well? The discharge इधर डालो, coefficient of permeability डाल दो, radius of well मिलेगा ना, डायरेक्टली डिजाइन करेगा डिजाइन ऑफ द वेल। समझ आ गया बेटा? ये पूरा फार्मूला किसको होता है? The entire formula related to whom? If you are going to construct a well in unconfined aquifer, आप अनकन्फाइंड एक्विफर में वेल कंस्ट्रक्ट करने के कारण से, अरे ड्यूपीट तो कुछ नया नहीं किया ना। देखो बेटा, ड्यूपीट कुछ नया किया क्या? हाँ, ही टुक डार्सी इक्वेशन, Q इज इक्वल टू क्या है, इनमें इंटीग्रेशन कर लिया बस। डार्सी इक्वेशन लेके दो लिमिट डाल के, रेडियस का लिमिट, हाइट का लिमिट डाल के
इक्वेशन डेराइव किया यूपी, कुछ नया नहीं। यस और नो, ही इन्वेंटेड एनी न्यू फार्मूला? R is radius of influence, RW is radius of well. Gaurav garu, capital R is radius of influence. Capital R, radius of influence. RW, radius of design well, proposed well. We are proposing to construct a well, na? That well's radius, proposed design well radius. डायग्राम में तो ये R होता है, RW. This is RW, ना? गौरव, this is R radius of influence. समझ आ गया? चलो विशाल न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल, अरे कौन बोल रहे? थैंक यू। बंदूक की जरूरत क्या है? हमारे पास अंशु कुमार 90 ml है, कब चाहिए वो दिएगा। whenever we need immediately we will transfer it. थैंक यू वाला को मारो। ठीक है, so ये 30 सेंटीमीटर वेल penetrates unconfined aquifer. 30 सेंटीमीटर वेल, we are talking about 30 सेंटीमीटर वेल penetrating an unconfined aquifer clearly. So क्वेश्चन सॉल्व करने का पहले हम ये देखना पड़ेगा what type of aquifer, क्योंकि if it is coming confined aquifer that goes to themes. Now it is unconfined, so we have to talk about Jupiter. 30 centimeter well penetrates an unconfined aquifer. Saturated thickness of 50 meter completely. Saturated thickness of 50 meter completely. ये तो H होता है बेटा, कैपिटल H. Unconfined aquifer में ये बात तो ध्यान से सुनो. Unconfined aquifer, what is thickness का letter given? Thickness of aquifer letter B is equal to H. Both same in unconfined aquifer. Unconfined aquifer में thickness is equal to height होता है, same. Under a steady pumping rate for a long time, they are giving drawdowns for us. Drawdown क्या होता है बेटा? Drawdown. Drawdown is yes. Yes is a drawdown. Drawdown set to observation wells, 18 meter, 28 meter from the well are 7 meter and 3.8 meter respectively. सुनो, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में वेल हाइड्रोलिक्स करेगा ना आपको, कल वाला क्लास तक भी करेगा, ये ड्यूपिट्स थीम्स को नहीं करेगा और बोलेगा वेल हाइड्रोलिक्स खत्म हो गया। ये तो करना पड़ेगा, वेल हाइड्रोलिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ड्यूपिट्स थीम्स करना पड़ेगा। सो टू ऑब्जर्वेशन वेल्स 18 मीटर एंड 28 मीटर अवे फ्रॉम द वेल। ये समझ आ गया? दिस इज R1 R2 नॉट ड्रॉडाउन्स। ड्रॉडाउन्स कहां लिख दिया? S1 S2 यहां लिख दिया। देखो बेटा, फ्रॉम आवर वेल वन ऑब्जर्वेशन वेल इज 18 मीटर, दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल इज 28 मीटर। इनको पहले वेल को ड्रॉडाउन S1 होता है, दूसरा वेल को ड्रॉडाउन 3.8 मीटर होता है। हम क्या सोचेगा, इधर ड्रॉडाउन लिख दिया ना, ड्रॉडाउन सेट टू ऑब्जर्वेशन वेल्स, इमीडिएटली वी टेक दिस वैल्यू। नो, ड्रॉडाउन सेट टू ऑब्जर्वेशन वेल्स 18 मीटर एंड 28 मीटर फ्रॉम द वेल R ड्रॉडाउन्स R इधर लिख दिया, ड्रॉडाउन्स R 7 एंड 3.8। दैट पॉइंट समझ आ गया आपको? आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो 1 मिनट, ये तो हमारा डिजाइन वेल, ये तो हमारा डिजाइन वेल, ओके। एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन वेल 1, दिस इज ऑब्जर्वेशन वेल 2, ऑब्जर्वेशन वेल 2, ऑब्जर्वेशन वेल 1, डिजाइन वेल। सो यहां से यहां तक का दिस इज मिड पॉइंट, दिस इज R1, क्या दिया R1? 18 मीटर, और यहां से यहां तक दिस इज R2 28 मीटर। समझ आ गया? इट्स नॉट अ ड्रॉडाउन, इट्स नॉट अ ड्रॉडाउन, रेडियल डिस्टेंसेस बोल रहा है, रेडियल डिस्टेंसेस बोल रहा है। 30 centimeter is the diameter of the well. This is B. 30 centimeter is our well diameter. Okay, dia of the well, dia of the well. Now S1 S2 given, H1 H2 मिलेगा। H1 is equal to 50 minus 7, 43 meter. H2 is equal to 50 minus 3.8. Okay, मुक्का करो भाई, 46.2 meter, 46.2 meter. Permeability given, discharge एंड ड्रॉडाउन एट पंपिंग वेल, डिस्चार्ज एंड ड्रॉडाउन एट पंपिंग वेल। पहले तो डिस्चार्ज निकालो, हो जाएगा, आसान में हो जाएगा। पाई इंटू 30 पाई के, H2 स्क्वायर 46.2 होल स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर ln R2 by R1 28 by 18, 28 by 18। सो व्हाट आर यू गेटिंग नाउ? डिस्चार्ज 60887.48 मीटर क्यूब पर डे। ये मिल गया, 60887.48 मीटर क्यूब पर डे मिल गया। चलो, वी नीड टू फाइंड आउट ड्रॉडाउन इन द पंपिंग वेल। ये वेल को ड्रॉडाउन होना चाहिए, वी नीड ड्रॉडाउन फॉर दिस वेल। सो हमको तो डिस्चार्ज तो पता है अभी, वी ऑलरेडी नो द डिस्चार्ज ना, अभी आ गया 60887.48 इज इक्वल टू 60887.48 इज इक्वल टू क्या होता है? पाई के, पाई इंटू 30। सो आई एम टेकिंग ऑब्जर्वेशन वेल 2 डेटा, ओके। सो इट इज 46.2 स्क्वायर माइनस HW स्क्वायर ln 28 by 0.15, 28 by 0.15 ना,
because observation well to radial distance 28 meter, dia is 30 centimeter, radius 15 centimeter, 0.15 meter radius of the well, 0.15 meter radius of the well. तो HW निकलना पड़ेगा. How much HW are getting? Yes, correct. In which part we use second formula? In which part we use part 1 or part 2? Here we are using second formula. But second formula में radius of influence नहीं है ना. So इनका वजह से as radius of influence is not there, we are taking HW in this case. H2 square minus HW square लें because radius of influence not given. ये दिया तो आसान होता है हमारा activity. We don't have radius of influence, that is why. You can take H1 minus HW also. H1 square minus HW square also you can do. In place of here 28 you can take 18. That's it. In place of 28 you can take 18. No problem. Nobody can ask you. Same answer मिलेगा दोनों से. नेगेटिव में क्यों मारे? नेगेटिव में आ रहा है क्या? डिस्चार्ज कैलकुलेटेड करेक्ट है. पहले तो ये चेक करो डिस्चार्ज वैल्यू करेक्ट है. Maybe two values you are getting plus 35 minus 35. ठीक है, एक काम करो ना 47 स्क्वायर एंड 18 लेके सॉल्व करो. इधर 47 स्क्वायर इधर 18 लेके सॉल्व करो. क्या आएगा चेक करो एक बार. 6085 6085 43 43 ले लो. 43 18 लेके सॉल्व करो. क्या आ रहा है चेक करो एक बार. सेम नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, HW क्या आ रहा है बोलो. क्या आ रहा है 35 आ रहा है. देन ड्रा डाउन लिखो, कोई दिक्कत नहीं. टेक इट लाइक दैट. ड्रा डाउन पॉजिटिव वैल्यू ले लो. 50 minus 35 15 हो जाएगा. प्रोसीजर तो करेक्ट है, थोड़ा डेटा में थोड़ा मिसमैच होगा. प्रोसीजर तो करेक्ट है. सॉल्व करो खत्म. अरे 35 ले लो बोल रहे ना. मे बी यू आर हैविंग टू लिमिट वैल्यूज प्लस 35 minus 35 while derivation. चलो ये कैलकुलेशन तो हमको पता है, आप कैलकुलेटर से करना पड़ेगा. आंसर तो 15 मीटर. चलो आंसर तो करेक्ट है. 50 सेंटीमीटर वेल. क्या हो गया? अच्छा गाल कहां चले गए? अच्छा जी चपंडी. ये सब मत लेना पड़ेगा बेटा, ये तो गलत बात होता है. क्योंकि HW कम वैल्यू होता है ना. पिक्चर में देखो एक बार. HW कम वैल्यू होता है ना बेटा. चेक करो HW क्या हो गया. HW इज लेसर वैल्यू, H1 इज ग्रेटर और ग्रेटर. ऐसा भी होता है ना. सो यू डोंट टेक लाइक दैट. चेक. चलो 50 सेंटीमीटर वेल completely penetrates in an unconfined aquifer of 60 meter depth. A long period of pumping at a steady rate of 2500 lpm. Long period of pumping, steady rate of 2500 lpm. The drawdown into observation wells 35 meter and 85 meter. From pumping well 3.52 meter. Determine transmissivity. So you understand, this is the dia of well. This is capital H. Unconfined aquifer. Discharge 2500 lpm. 2.5 by 60. Okay, take 2.5 per minute. Meter cube per minute. 2.5 meter cube per minute. ऐसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं. Now, R1 35, R2 85, S1 3.5, S2 2 meter, H1
60 minus 3.5, 56.5. H2, 60 minus 2, 58. So discharge 2.5 meter cube per minute is equal to pi k, 58 square minus 56.5 square ln 85 by 35. 85 by 35. So k क्या रहा है? (4.11 into 10 to minus 3 आ रहा है. 10 to minus 3 meter per minute. That is meter per minute ना? No issue. No issue. ऐसा भी आएगा. Now transmissivity T is equal to KB. 4.1 into 10 to minus 3 into 60. Into 60. 0.246 meter square per minute. 0.246 meter square per minute. हो गया? एक काम करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की चेक करेंगे एक बार. ये खत्म हो गया, पता हो. So you substitute here, na? You substitute your discharge in this equation. Find out what is coming here. You don't take it as H. 60887.48 is equal to pi into 30, 46.2 square minus H square ln 28 by 18. क्या है H? आपका कैलकुलेशन गलत है या नहीं अभी पता चलेगा. What is the आ रहे ना? प्लस आ रहे माइनस आ रहे, प्लस आ रहे माइनस आ रहे. So no worries, our process is correct. Don't worry then. ठीक है? चलो. Checking for question. Questions नहीं है. Confined aquifer को बहुत ज्यादा है, unconfined को नहीं है. Dupit's assumptions are valid for, देखो 1 mark question आ गया. Dupit's assumptions are valid for gate 18. Gate 18 question. किसी को डाउट है? Dupit's assumptions are valid for. For an unconfined aquifer, specific yield is 20%, specific retention is 15%, permeability 35 meter per day, porosity 35%, transmissivity 35 meter square per day, volume of water lost from storage per meter drop in the water table 100 kilometer square of the aquifer is 20. Means ये बोल रहा है specific yield दिया, specific retention दिया, permeability दिया, given data में 1 2 3 points है, 1 2 3 में क्या करेक्ट है? फर्स्ट तो 2 होता है, n is equal to specific yield plus specific retention 35. ये तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है. परमिएबिलिटी के 35 मीटर पर डे है. ट्रांसमिसिविटी क्या होता है? ट्रांसमिसिविटी यूनिट विड्थ को बोल रहा है, यूनिट विड्थ लेने के बाद क्या होता है? यूनिट थिकनेस को 135 मीटर स्क्वायर पर डे होता है, यूनिट थिकनेस को. नाउ द वाटर लॉस्ट फ्रॉम स्टोरेज पर मीटर ड्रॉप, देखो पर मीटर ड्रॉप 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इज 20 मिलियन मीटर क्यूब. सो एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर, 1 मीटर ड्रॉप, स्पेसिफिक यील्ड 0.2 into 10 power 6, 20 into 10 power 6 मीटर क्यूब, 20 into 10 power 6 मीटर क्यूब होता है ना बेटा. दिस इज आल्सो ट्रू. हाउ टू? अरे थर्ड वाला इज यस्टरडे फार्मूला. थर्ड वाला डेल्टा GWB इज इक्वल टू SY ये इनटू डेल्टा GWT. SY इज टेकन, हो गया ना, समझ आ गया ना कल वाला फार्मूला. सो वी कंसीडर्ड 2 as per unit thickness. लकी गारू, we considered it as a unit thickness. Means for 1 meter thickness, क्योंकि डेटा में thickness नहीं दिया तो 1 meter thickness कंसीडर करके सॉल्व करेंगे ना लकी बेटा. 1 meter thickness कंसीडर करके सॉल्व करेगा ना. क्लियर? ये कौन रे बाबा बार बार बोल रहे हैं. थैंक यू. स्पेसिफिक स्टोरेज इज स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट डेप्थ ऑफ एक्विफर. स्पेसिफिक कैपेसिटी इज स्टोरेज कोएफिशिएंट पर यूनिट एक्विफर. स्पेसिफिक कैपेसिटी इज a constant for a given well. For a one-dimensional flow in a confined aquifer between two water bodies, isometric headline and aquifer in the aquifer is a straight line. बोलो. Specific storage is specific capacity per unit depth of aquifer. True. Specific storage is specific capacity per unit depth of aquifer. Specific capacity is not related to storage coefficient. It's not related to storage coefficient. Specific capacity is constant for a given well. True. For a one-dimensional flow in a confined aquifer between two water bodies, isometric headline इंक्लाइंड होता है ना. isometric headline इंक्लाइंड होता है ना, नॉट स्ट्राइट लाइन. ग्रेडियंट, ये तो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट.
सो विल डू टुमारो, डन। थैंक यू वाला मर जाएगा, अभी बंद नहीं करेगा तो। सो टुमारो नहीं, मंडे, नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी क्लास मंडे, मंडे इज नेक्स्ट क्लास, ओके। मंडे को ईद है, सो छुट्टी चाहिए मंडे, छुट्टी चाहिए मंडे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ट्यूसडे रखो, ट्यूसडे ले लो। अरे इनको भी हम थोड़ा करना पड़ेगा, फॉर देम आल्सो वी नीड टू रेस्पेक्ट। हो जाएगा बेटा, टेंशन में मत चलो, 2 दिन में हो जाएगा। टुमारो 11 AM तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, 11 AM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लासेस, ओके, 11 AM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लासेस देयर, डोंट मिस इट। अरे टुमारो 11 AM क्या होता है, टुमारो 11 AM क्या प्रॉब्लम है आपको? हाइड्रोलॉजी का क्लास में वो लगा दिया, क्या प्रॉब्लम है? मर जाएगा क्या रे आटा बाबू? हाइड्रो का क्लास का जगह पे यार है, हाँ 11 AM हाइड्रो का क्लास पे SWM टेस्टर है, क्या हो गया आपको? ट्रांसपोर्टेशन राजेंद्र प्रसाद सर से करो, संयम आरपी सर अच्छा होता है। नो टुडे वी डू नॉइज पोल्यूशन, यागेश टुडे इवनिंग 5:30 नॉइज पोल्यूशन, गेट को नहीं बट पूरा जमाना में गेट सिविल में नहीं चैप्टर, दिस इज नॉट देयर इन गेट सिविल बट इन एनी एग्जाम, स्टेट एग्जाम, SSC, जेईई, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है। ओनली इफ यू वांट टू राइट